दीपक वोरा साहब, एक तो जंग हम पहले से ही देख ही रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच में। 18 दिनों से यूक्रेन की धरती पर वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है। क्या अब दूसरा युद्ध भी अमेरिका और ईरान के बीच देखने को मिलेगा? इराक में जो इस वक्त अटैक हुआ है उसे आप कैसे देख रहे हैं? आपका धन्यवाद कि आप प्रिविलेज मुझे दिया है आपके चैनल पर शामिल होने का, जहां पे मैं हूं इस समय न्यूयॉर्क में। 12 मार्च के 8:45 बजे हैं रात के, और ये जो खबर है ये सारे अमेरिकन टेलीविजन चैनल्स पर आ रही है। आपने इसकी शुरुआत की है, वेल डन TV9 भारतवर्ष, यू आर द बेस्ट। ये क्यों हो रहा है मैम? ये समय, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा है, क्या ये स्पिल ओवर है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का? क्योंकि कहते हैं कि रूस कुछ मिडिल ईस्टर्न फाइटर्स को रिक्रूट कर रहा है जिनके पास तजुर्बा है फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज। अभी कह रहे हैं कि 5, 6, 7, 12 ईरानियन प्रोड्यूस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स इस इलाके पर हमला किए हैं, जिसे एरबिल कहते हैं। इराकी कुर्दिस्तान की राजधानी है। इराकी कुर्दिस्तान एक ऑयल और रिसोर्स रिच एरिया है। और फिर जो उनके नेता हैं मुक्तदा अल सदर, उन्होंने अभी ट्विटर पे अभी देखा है मैंने कि अरबिल इज अंडर फायर, जैसे कि कुर्दी लोग हैं वो इराकी नहीं है। यूएस ऑफिशियल तो ये कहेंगे कि ईरान की गलती है। अब ईरान से क्यों नाराज है? अभी तो कुछ दिन पहले वो कह रहे थे, जब सऊदी अरेबिया और यूएई ने कहा कि हम तेल का उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे कीमतों को स्टेबलाइज करने के लिए, तो अमेरिका कह रहा था ईरान से, अरे मेरे भाई आप बढ़ा दीजिए। तो एकदम से फिर क्या गलती होगी? मेरे हिसाब से सर 2 चीजें इसमें स्पष्ट हैं, क्योंकि मैं इस इलाके में रहा हूँ, मैं यहाँ सर्विस की है। पहला, ईरान ये फिर से बताना चाहता है यूएस को कि भले ही आप मेरी दोनों गालों पर चुम्मी देके कह रहे हैं कि आप मेरे भाई हैं और हम आपके दोस्त हैं, ये बता दें कि इस एरिया में ईरान के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा, ईरान ये स्पष्ट संदेश दे रहा है सारी दुनिया को कि जो इस समय जंग चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, बड़ी घमासान लड़ाई हो रही है, उसका असर मिडिल ईस्ट पर पड़ रहा है, ऑयल प्राइसेस पर पड़ रहा है, फूड प्राइसेस पर पड़ रहा है, और ईरान के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपकी जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो भी सस्पेंड हो गया। ईरान कहना चाहता है उसको वापस लाइए, सैंक्शंस मुझ पर हटाइए। बिल्कुल, तो ये काफी इसको लेकर काफी तनाव भी नजर आया है। कभी ईरान और अमेरिका जो अच्छे दोस्त हुआ करते थे, सैंक्शंस का मसला हो, तमाम मसले हो, आज अदावत दोनों मुल्कों के बीच पूरी दुनिया के सामने है। अंकिता, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है? जी हाँ करुणा, जिस तरीके से लगातार सबसे पहले ये खबर हमने ब्रेक की है, और सबसे पहले भी हम इराक से रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ दिलान सरवन सीधे इराक से जुड़ रहे हैं। A very warm welcome to you, sir, on TV9 भारतवर्ष। Thank you so much. Thank you for having me. Dilan साहब, I just wanted to know you. American military base has been reportedly targeted by Iranian militant group. Sir, what is the latest information you can provide us? The latest information we have is it's not certain where it came from. It's not certain if it was Iranian or not. What we know is 12 missiles were headed toward the new U.S. consulate building in Erbil. And as far as we know, according to the Kurdistan region's counterterrorism forces, they say that these missiles came from outside Iraq and they came from the east. The closest suspect of this is, of course, Iran, as they have previously targeted U.S. missions in Iraq. Right. Silvan Saab, American consulates have been targeted. The planes of the U.S. Air Force are on alert in the Middle East, and America has already moved 2 planes towards Iraq. Do you sense any combat? What is your take, sir? What we have so far is we spoke to the Department of State, and they say that they condemned the attack. However, they referred us to the Kurdistan region officials. I don't think there's going to be any combat. Especially because, just like every other attack that has been done previously, there are no casualties, there is no injuries, and the missiles didn't even strike the place where they were supposed to strike. Right. USA top officials meeting with Biden is underway, sir. What do you sense out of? What do you make out of it? It's not. It doesn't necessarily mean that this meeting will be discussing what just happened in Iraq, and in fact, if it is discussing this, it's going to be a new escalation in the Iran-American talks, especially when it comes to the JCPOA. And given the war in Ukraine, given the war Russia has started on Ukraine,
a lot is going to change in the coming weeks. And this attack is not helping Iran, it's not helping the world, it's not helping anyone. Silvan Saab, the way it has been panning out, do you sense things will go in whose favor? Because as we have been noticing these things amidst Russia-Ukraine war, do you think it will escalate the war? I don't think, now the main point of concern right now is the whole world right now wants Iran to re-enter the oil market. The reason for this is prices have hiked ever since the war started, and the only way to stabilize this while maintaining sanctions on Russia is by putting Iran back into the market. If Iran goes on with these moves, I don't see that happening anytime soon. And the only people that are going to suffer from this are locals, Okay, civilians Silvan sir, I have a question. that will have to pay I have more. a question to you. Do you see just it's a Yes. conflict between Iran and America? That's why these attacks have happened, or do you see any relation between Russia and Ukraine war and these attacks on U.S. consulates? To be fair, I'm going to tell you something else. There is a lot more to this than just Russia and Ukraine, a lot of internal conflicts, a lot of Iran-backed groups inside Iraq that are currently not approving of the way the process of forming the next Iraqi government is working. And these are all major factors that would fuel Iran into performing these attacks. The KDP, who rules the Kurdistan region, who is the ruling party, has sided with anti-Iranian groups in order to form the next government. And these all have major effects on the whole situation. अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।